ओके चलो, अभी मार्केट खुलने वाला है. So we're gonna do a tape read session. It's 9:26 right now, right? The arrays that I've marked is pretty simple, right? मैं दिखा देता हूँ आपको. uh, the arrays I've marked is I've gotten this suspension block. आप settlement off करो और दिखेगा आपको ये suspension block. मैंने ये wick को मार्क करके रखा है because this wick is the significant बड़ा सा wick जो है जो suspension block को भी cover कर रहा है, right? एंड हमने यहाँ ऊपर मार्क करके रखा है, बट द बॉडीज हियर आर ऑलरेडी टेलिंग यू द स्टोरी. दिस कैंडल ओपन्स अप, ट्रेड्स इनटू द लोअर क्वाड्रेंट. एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स देखो, वीक है प्राइस, राइट? फेल्स टू गेट टू द लोअर क्वाड्रेंट बाय टिक और समथिंग एंड इट फॉल्स ऑल द वे एंड ये विक को पूरा खा गए, राइट? नाउ ये विक है, राइट? आई एम गोना वॉच दिस विक हियर, राइट? ऑन अनदर चार्ट, मैं दूसरे चार्ट पर दिखाऊंगा. एंड मेरे पास ये इनएफिशिएंसी है सेटलमेंट में. अभी ऑफ कर देता हूँ बिकॉज सी व्हेन आई सेटलमेंट में ऑफ करने के बाद थोड़ा और क्लियर हो रहा है. दिस कैंडल बिकम्स अ बिट मोर क्लियर, बट द फेयर वैल्यू गैप तो सेम ही है. एंड वी हैव ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, हम इसको भी मार्क कर सकते हैं. गिव मी अ सेकंड. ओके, देयर यू गो. दैट्स आवर रियल न्यू वीक ओपनिंग गैप. सेटलमेंट ऑफ करके वी हैव आवर गैप हियर. एंड व्हेन वी ड्रॉप बैक इनटू अ 15 मिनट और अ 60 मिनट टाइम फ्रेम, आपको दिख रहा है लुक एट द बॉडीज हियर, ओवरशूट किया है बट दूसरे एक विक के लोअर क्वाड्रेंट से ही नीचे गिरी है, राइट? I'm going to take, okay, this is the old pool of sell side liquidity. Look at the bodies here, right? And we have these relative equal lows जो हमारे daily BC के upper quadrant, octants नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए quadrants, right? तो इसको मैं कर दूंगा black and I'm gonna turn off this off and I'm just gonna turn the text off, right? तो upper quadrant पास ही हमारे पास ये sell side liquidity है पड़ा है, right? So that's what I want to see it open, right? Maybe retrace कर सकती है short term. We have a data high here, है ना? और अगर SMT SMT check करना है, so this is that dealing range I was talking on my Instagram stories, right? So buy side has been breached, right? 60-minute inefficiency, 50-minute inefficiency से आ रही है. Dollar is bullish, right? Which makes Nasdaq bearish. तो दैट इज द विक जो मैंने दिखाया, सिंगुलर विक को मैंने मार्क किया था. ये जो विक है डेली पर, एंड मैंने ये इनएफिशिएंसी और ये ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग प्राइस भी मार्क किया है, और ये डेविल्स मार्क है. ओके, दिस इज अ डेविल्स मार्क बिकॉज हमको व्हेन 26 में ओपन वी डिडंट हैव अ सिग्निफिकेंट मैनिपुलेशन टू द डाउन साइड, सो दैट्स अ डेविल्स मार्क, राइट? सो वो डेविल्स मार्क आपको इधर दिखी जाएगा. लुक एट दैट, राइट? न्यू वीक ओपनिंग गैप पर संडे ओपन एंड डिड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट मैनिपुलेशन. दिस May 26th का वीक, राइट? So I'm expecting a return back into the new week opening gap, right? Now, if we are bullish, sell side has been breached. Wick के upper quadrant से ही we're probably gonna get the buy side here. Okay, what else to show you? What else to show you? मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, right? Um, so if this is your drawn liquidity, right? And this is the, you're saying that this is the high of the week or short term high. तो ये high से लेके ये drawn liquidity का एक implied dealing range draw करना, right? So this high to this low is your implied dealing range. Price comes below here, that's the upper quadrant, comes underneath the equilibrium, takes out sell side, inefficiency से rebalance करने ऊपर जाती है, rebalance the whole 60-minute inefficiency here, upper quadrant तक गई, and look at the bodies, overshoot किया and then falls back again, fails to get to the equilibrium. That is weakness, right? Now इधर आने के बाद shots become a little bit tricky. You want to see speed here, right? इधर से short term retracements बन सकते हैं, but अगर speed मिल जाए बढ़िया है, because you can see that ये देखो, look at that, look at that. That's not random, eh? Okay, market is opened. Oh, I missed the opening, bro. Hello, market is open. What we're gonna do is um opening range gap mark करेंगे. 400 handle का opening range gap बना है. Also, Asia has moved a lot, which makes Friday really fucking tricky, right? So I want to see a return into this here, right? इधर return देखना है मेरे को. What else is holding price as of now? 15 minute पर हम देखें, so we have this 15-minute inefficiency.
here, which is a perfect discount array with this inversion here. So what I'm going to do is I'm going to mark this inversion, right? And I'm going to extend it. I'm going to change my color to this inversion here. I'm going to drop back into 1 minute. Bang on. What is that? Random bolte, right? We have data highs here. We have these relatively equal highs here. Okay. Don't forget about those relatively equal highs, right? Because we are in too much of a discount now to be looking for shorts. अगर आप weekly, scalp वाइप तो बनी जाएगा. But let's see अगर इसको ये 15 minute inversion को rebalance करके if it wants to give us a move. Okay, dollar is reaching higher, right? ये देखो wick के lower quadrant पर ही हमको दिखाई दे रहा है. Anyway, we have London highs here as well. Okay, London highs भी इधर है जो इक्विलिब्रियम पर ही है, राइट? डेली का जो लेग मैंने दिखाया था उसके इक्विलिब्रियम नहीं, उसके अपर क्वाड्रेंट पर ही हमारे पास एक बाई साइड इंजीनियर है. सो not going to make it too complicated. Let's see this how this plays out. Okay, we've returned back in the suspension block, है ना? अगर ये सस्पेंशन ब्लॉक के अंदर आ गया है, वो जो विक मैंने दिखाया था डेली पर, मैं इधर आपको दिखाई देता हूँ. देयर वी गो. मैं इसको हटाता हूँ. I'm gonna be like current interval and below. So ये जो बड़ा सा विक है, नाउ मैं जब सेटलमेंट ऑन करूंगा तो मेरे को ये विक दिख रहा है. आई एम चूजिंग दिस विक बिकॉज दिस इज अ बिग एस विक व्हिच इज कवरिंग द सस्पेंशन ब्लॉक, राइट? नाउ ये लोअर क्वाड्रेंट है, ये विक का लो है, राइट? 931. ओके, दैट्स आवर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप राइट देयर. ओके, हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमको मिल चुका है. तो वी आर गोना मार्क आवर फर्स्ट प्रेजेंटेड. ओके, राइट? वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी. अरे ये क्या हो गया? तो से ऐसे आने सर थाना ना दिल. ओके, सो ये जो सिंगुलर विक है उसको मैं देख रहा हूँ. मैं दूसरे चार्ट पर मैंने मार्क करके रखा है, राइट? दिस इज दैट विक आई वाज टॉकिंग अबाउट. अपर क्वाड्रेंट के नीचे आ जाए फॉर नाउ, राइट? इफ प्राइस कैन कम बिलो हियर, राइट? एंड डेली तक आई है, पक्का डिस्काउंट तक तो आ ही गई है. तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड आई एम गोना वॉच थोड़ा स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस हियर, राइट? ओपनिंग रेंज गैप तक, ओके, अंदर तक गई है, फेल की. टू कॉन्ट्रैक्ट्स एफिशिएंसी इधर ही है, सेल साइड किधर है, मिनट सेल साइड भी उधर है, और हमारे पास ये 60 मिनट का इनएफिशिएंसी भी इधर ही है. So I want to see there 3 minute inversion. I want to see how that's acting as of now. Okay. Okay. Let's see. Mm-hmm.
ये देख रहे हो, दिस विक हियर, राइट, फेल्स टू गेट टू द विक हाई, है ना, और नीचे गिर गई. Low has been taken, है ना, the short term low has been taken. Now अब the real game starts here. I want to see what price does here. Market is really fucking volatile, okay? So be really careful. 2 minute पर क्या है, 2 minute पर एक बन रहा है, 5 minute inefficiency, 3 minute जो inversion मैंने दिखाया था here, right, here, उसको पूरा ही खा जाए. ये 15 minute basic को मैं just mark करके I just want to see the 3 minute basic है, the inversion lying with the basic. This is a bullish break. This is a bearish breaker, right? This down close candle. I'm going to take this off. Give me an up close थोड़ा अच्छे से. Bang. I'm going to sell it there at the breaker. Okay. Selling it at the breaker, है ना? Where can my stops go? ये है breaker का high, right? Stops can go there. Breaker का high and a tick above it. Anticipating this getting left as a breakaway gap, right? Or DOL right there. But 50% इधर है. So I can partial one at 942. Okay, let's just hold it. Let's see what happens. एक और चीज दिखाता हूँ. ओपनिंग रेंज गैप तक गई, फेल्स टू गेट टू द अपर क्वाड्रेंट. मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क नहीं करके रखा है, मैंने दूसरे चार्ट पर मार्क करके रखा है, बट यू गेट द ड्रिल. आरटीएच पर भी मैं देखता हूँ 15 मिनट. ओके, 15 मिनट सेल साइड इधर है, 15 मिनट सेल साइड इधर है. सो आरटीएच पर इधर वी हैव अ पूल ऑफ सेल साइड that's giving us about 88 handles. So let's see how this plays out. Last day of the week, right? अगर ये अगर stop out हो जाए तो stop out हो जाए, it's fine. Because Friday ko it's usually tricky anyways. That's all. I'll try to partial and take my risk off. Inversion tak आई, right? अगर हम sell program में I want the inversion to get, you know, push price lower, act as a reclaimed CB. So I'm going to change the color to red because I want it to act as a reclaimed 15-minute CB on the 1 minute to send price lower. Okay. 15 minute पर previous day low pass में ही है. So when ES takes, ES का बात कर रहा हूँ, when ES takes the previous day low मैं Nasdaq पर एक partial करूँगा. Okay, ES पर I think 15 handle away है, 15 point. So when that happens I'm gonna partial on NQ. Now the opening price इधर close होने की ज़रूरत नहीं है to become a bearish order block. Once the open gets crossed by a wick, that becomes your order block right there. ठीक है, order block को we don't need the close. लोग कुछ भी कर रहे हैं, right? आज मेरे को गाली देने का मन ही नहीं है. I'm just gonna be a little easy on SMC, so-called SMC traders today. I'm gonna go easy using this breaker
to go short, है ना, मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ, this breaker, using that breaker to go short. Why? Because inversion से बीक है, lower quadrant पर ही है, हमको discount ray की तरह use करना चाहिए, we want it to get used as a discount ray, right? Classic Judas, minor buy side, relative equal highs, inefficiency, first presented inversion, right? Single pass inversion. And wick के वहाँ ही पहुँचा, daily base इधर है, पास में ही है, so if it wants to enter that area, I want to see it. Yes पर I'll show you. Yes, this low is what I'm talking about. ये low लेने के बाद I'm gonna go I'm gonna take my contract off, एक off करूँगा मैं, so I'm waiting. Yes पर उठाए उसको, right? I don't want to see return back into the opening price. ये wick को use करे, then price lower. I want to go into 15 second ऐसे ही, inefficiencies, but I'll come off 15 second because majority of the people don't have access to the 15 second. It's completely fine, you don't need that shit. Okay, the body is telling you the story. Breaker के wick के, right? Just waiting for ES to get to the sell side. I'll take one off. Inefficiency here, overlapping with the order block का wick, right? Dollar bullish ही है, बढ़िया है. Institutional order for entry drill. Okay, IO Fed right there. If it can give me, it would be nice. IO Fed. To adjust मेरे दूसरे monitor पर I'm adjusting a few things. मेरे थोड़ा spread वेड लगा है on my real accounts, which is fine. Did not get the exact, so I'm gonna partial in a bit. Bang, I'm gonna partial right there. Shit, I fucked the partial up, right? मेरे को ये जब ये swing low break हो रही थी, मेरे को I don't know, I fucked up the partial थोड़ा, which is okay, not, you know, अगर फ्राइडे को आए तो थोड़ा पार्शल वार्शल करो भाई, पैसे वैसे हाथ में डालो भाई. You're getting into the market, stops can go right there. I can hold the whole shit अब now, risk free करके I can hold it, है ना, रिस्क को पूरा ही हटा देते हैं, right? मैंने रिस्क हटा दिया, बहुत जल्दी मैंने रिस्क हटा दिया. दिस इज व्हाट साइकोलॉजिकल कंफर्ट दिख रहा है आपको, मेरे को अब रिस्क ही मैंने हटा दिया, राइट? मैंने फ्राइडे आए 2-3 मिनट में मैंने पार्शल बुक कर दिया, है ना, कितने हैंडल का, 3-1-1, राइट? और मैंने 50-60 हैंडल्स तो मैंने बुक ही कर दिया ऑलरेडी, राइट? bearish order block, institutional order for enter drill, bearish order block, sell program पर है हम, okay, we are in a sell program right now. This is our 15 minute plus IFVG turned into reclaimed CB, right? Oh,
मैंने और बुक कर दिया, और मैंने कर दिया बुक। एग्जिटिंग एट द सेल साइड और डेली बीसी के अंदर हम एग्जिट करेंगे। मैं आपको थोड़ा जादू दिखाई देता हूँ। डिक्सी इज बुलिश, ओके। लुक एट द विक गेटिंग यूज्ड, जो मैंने कहा था विक के अंदर आ गए, विक के ओके 50% के अंदर आ गए। नाउ आई डोंट वांट टू सी एनी रिटर्न बैक इनटू इट। अटैक द लोअर क्वाड्रेंट, fucking deep dive into the FEG, and my TP is gonna get hit every single fucking day. Inefficiencies here, inefficiency here, right? Inefficiency, sell program. Look at the down close candle holding price, right? 1 माइक्रो पर 200 का प्रॉफिट। All you need is 1 to 2 micros, boys. अगर आपको पता है what you're doing, right? All you fucking need is 1 to 2 micros. The psychological comfort, बहन चोद, सबको एक मिनी से ट्रेड करना है। बहन चोद मैं तो मिनी, fuck man. Even after knowing this much, मैं मिनी को टच ही नहीं करता हूँ बहन चोद। अगर मिनी को मेरे को टच करना, I'll go 10 micros, because मेरे को पार्शल का स्कोप है उधर, है ना? These are the little tips and tricks, man. I'll be honest, I cannot handle a whole mini contract. मेरे को मेरा psychology, see, this is where you have to figure out what works for you. Exactly. I know myself. मेरे को पता है who I am as a person, right? I know my weaknesses more than my fucking strengths. वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने। दिल विल टूटा है क्या भाई? आपका दिल विल टूटा है क्या? हम तो भाई दिल तोड़े हैं भाई। हम तो दिल तोड़े हैं भाई। Which is not really a good thing to say, man. हम तो दिल बहुत तोड़े हैं भाई, बहुत दिल तोड़े हैं हमने। पश्चात 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 क्या क्या कहते हैं? अ, पछताया भी बहुत है सालों तक। बेंच, चलो, पर्सनल बातें तो कभी कभी थोड़ा बहुत पर्सनल बातें हो जाना चाहिए, राइट? इट कीप्स योर मेंटल क्लियर थोड़ा। इट्स एंटरिंग द डेली बीसी। वॉच द कैंडल्स है, लुक एट द कैंडल्स। कैंडल्स दिख रहा है आपको, राइट? डेली CBI सेल सेल को रिलेटिवली इक्वल ना छोड़ दे। ES पर उठा लिए, प्रीवियस डे लो, राइट? तो मैं इसको और ट्रेल कर ही सकता हूँ, इधर तक ट्रेल करते हैं, राइट? बिकॉज हम बहुत पास है। अब इधर से आई डोंट वांट टू सी अ रिटर्न, क्योंकि बहन शुद्ध मेरे पैसे प्रिंट हो रहे हैं इधर। Why do I want to feed my ego कि नहीं मेरे को हो bang on baby girl, as fucking usual? Who the fuck does this? Wait. क्लोज हो जा बेंचो इधर भी। ये हो गया। कभी कभी ट्रेड विद मैच होती है भाई। हाँ, चलो भाई, ओके। आपको दिख रहा है, राइट? इधर विक को हमने जो विक मार किया है, दे टोल्ड यू द फकिंग स्टोरी। ये देखो, राइट। Oh my fucking god, चलो ओके, आई एम गोना क्लोज इट। अब मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा स्टोरी वोरी डालता हूँ, राइट? एंड बस हो गया। व्हाट अ गुड ट्रेड। ड्रॉ डाउन था क्या? क्लोज टू जीरो ड्रॉ डाउन है। ऑल राइट बॉयज, आई एम गोना क्लोज माय रिकॉर्डिंग। आज का सेशन हो गया, टेप रीड सेशन हो गया। मैं इसका एक रिव्यू बनाता हूँ अच्छा सा, ओके? मैं थोड़ा सोच कर थोड़ा बेसिक सा रिव्यू बनाता हूँ मैं, ठीक है?